exhibition. I have made this painting. और मैंने बनाई है ये पेंटिंग और ये पेंटिंग। अच्छा, ये पेंटिंग मैंने कैनवस पैड पर बनाई है और सेम ये वाली कैनवस बोर्ड पे। फर्क ये है कि ये मैंने ऑयल पेंट से बनाई है और ये वाली एक्रेलिक से। अगर आप एक्रेलिक पेंट्स यूज कर रहे हो तो आप कैनवस पैड पे भी आप पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाते हैं अगर आप खाली केवल पानी के साथ एक्रेलिक पेंट्स यूज कर रहे हैं तो। And if you are using oil paints, it's better to paint on a canvas board like this one, because oil paints take some time for drying up. तो कभी कभी तो इनको 1 हफ्ता लग जाता है कलर्स को सूखने में, अगर द वेदर इज कोल्ड। समर्स में जल्दी से सूख जाते हैं। कैनवस पैड यूज करने का एडवांटेज ये है कि ये काफी सस्ता आता है एज कम्पेयर टू द कैनवस बोर्ड। और ये सब डिटेल्स के लिए हम एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाएंगे। फिलहाल तो देखते हैं कि शोना ने ये पेंटिंग कैसे बनाई। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। What's the number of this brush? It's 10. Okay. Now, yes, paint white in the remaining portion, except for that little strip which we have made. Yeah. Fill that strip with the blue color. Fill in the colors. Very good. Nice. Very well done. Blending. So, a sky is ready. Yeah. Good girl. फुल कवर करो। वेरी नाइस। हाँ, कर लो। एक्सेलेंट। ट्रीज का आउटलाइन बना लिया, अभी हम लोग फिल कर रहे हैं। लिंसेड ऑयल से मॉइस्ट करें ब्रश। कौन से नंबर का ब्रश लिया? Now we made the branches and we're coloring it.
थोड़ा सा इसमें ना we are using a tinge of white on the trees on one side. अच्छा mix the two colors, magenta and white. Mix it once and every time. पसंद है ना अरे शिमू निकला डांस कर गई हेलो बेटा wow for the arts bye you take care your painting has improved a lot, huh, Shona?